Hi everyone. So in this video we'll be learning about pinning and marking equipments that are used for sewing. So the very first thing जो हम use करते हैं pinning and marking के लिए that are the pins. So these pins are available in different sizes. ये अलग अलग sizes के होते हैं and based on the type of fabric on which it has to be used we decide which pins we are using. अगर ज़्यादा thickness का pin है तो हम heavy fabric पे ही use करते हैं. अगर fine fabric है तो हम उतना ही finer needle या finer pin use करते हैं. And we have to make sure कि it has to be stainless steel and highly polished surface होना चाहिए so that the fabric doesn't get spoiled when we insert the pin. Otherwise fabric जो है वो खराब हो सकता है, फट सकता है. सो जो बहुत ही स्लीकर पिन होते हैं, जो स्लेंडर पिन्स होते हैं, उनको हम सिल्क पिन्स कहते हैं और ये फाइन फैब्रिक्स के लिए यूज़ होते हैं. देन जो हेवी यूटिलिटी पिन्स होते हैं, जो हेवी मटेरियल के लिए यूज़ होते हैं, उनको ब्लैंक्स बोला जाता है. एंड जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड पिन है दैट इज़ कॉल्ड द ड्रेस मेकर्स पिन एंड ये मीडियम थिकनेस के होते हैं, मीडियम डायमीटर होता है इनका. सो जनरली हम ड्रेस मेकर्स पिन ही यूज़ करते हैं. देन देर आर बॉल पॉइंट पिन्स जो कि सूटेबल होता है निटेड फैब्रिक के लिए. जब भी हम निटेड फैब्रिक पे पिन्स यूज़ करते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि उस पिन का जो एज है आगे फ्रंट है इट इज़ नॉट वेरी शार्प, इट हैज़ टू बी राउंडेड. क्योंकि जब हम उसको इंसर्ट करेंगे निटेड फैब्रिक में देन द निटेड फैब्रिक कैन गेट डैमेज्ड. So only ballpoint pins should be used in netted fabric. Then we also use safety pins while trying any garment fitting or draping के time पे हम safety pins भी use कर सकते हैं. So these are the few types of pins that are used in as a pinning equipment. नेक्स्ट वी हैव इज अ पिन कुशन. अब इन पिन्स को स्टोर करने के लिए वी हैव कुशन लाइक थिंग्स ऑन विच दीज पिन्स कैन बी प्लेस्ड. सो उसके स्टोरेज के लिए हम ये यूज़ करते हैं. इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग तरह फॉर्म्स के आते हैं ये पिन कुशंस जो होते हैं. एज यू कैन सी द थ्री डायग्राम्स. द वेरी फर्स्ट डायग्राम द रेड वन, ये एक मतलब ऐसा क्वेश्चन है विच कैन बी केप्ट एनी वेयर ऑन अ टेबल और एनी वेयर एंड ऑन दिस वी इंसर्ट द पिन. जब भी हमने यूज़ करना है स्टोर करने के लिए हम इस क्वेश्चन के ऊपर हम पिन्स को लगा सकते हैं. Then the second one that you can see which can be tied on a wrist. So mostly जब हम walk around and work कर रहे होते हैं and in case of draping then we use this wrist वाला pin. So it is easier and it makes the function process even faster. So wrist में हम इसको tie कर सकते हैं and we can keep putting the pin or storing the pin in it, right? Next is this इट इज़ अ एमरी बैग पिन कुशन जो थर्ड टाइप है. सो इसके अंदर एमरी फिल्ड होता है. इसका पर्पस ये होता है कि जब भी हम पिन्स इसमें इंसर्ट करते हैं सो देर इज़ फ्रिक्शन जिसकी वजह से जो पिन है उसका एज है वो शार्पेंड होता जाता है. एंड अगर उसके ऊपर इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट और रस्टिंग अगर हो रही होती है तो उस फ्रिक्शन की वजह से वो रस्टिंग रिमूव हो जाती है. सो इट प्रिवेंट्स दिस एमरी बैग प्रिवेंट्स द पिन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड. अक्सर पिन्स अगर रस्ट हो जाते हैं एंड अगर हम उसको फैब्रिक पे इंसर्ट करेंगे तो फैब्रिक विल गेट डैमेज फ्रॉम दैट पॉइंट, राइट? सो इन ऑर्डर टू prevent any kind of rusting on the pins, we store it on a or we place it on a rusting emery bag. So these are the three kinds that can be used. Then there is another एक holder होता है which is magnetic pin holder भी होता है. तो उसमें magnet लगा होता है which prevents the pin from falling. तो जो pins हैं वो गिरेंगे नहीं, वो magnet की वजह से it will get attracted and it stays onto it. जो ये पिन कुशन होता है सो इसका जो मोस्टली इट इज़ मेड अप ऑफ फेल्टेड फैब्रिक या फिर वेलवेट के फैब्रिक या वुलन फैब्रिक का बना होता है द आउटर सर्फेस एंड इनसाइड देर इज ईदर वूल हेयर और ग्राउंड कॉक और अ फोम यूज होता है उसकी फिलिंग के लिए. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पिन कुशन दैट कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट वी हैव इज़ अ टेलर्स चॉक. सो मार्किंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? चॉक यूज़ करते हैं. देन किसी भी तरह का हमने जब पैटर्न हम ड्रॉ कर रहे होते हैं देन वी यूज़ अ
So basically, these chalks are you made up of different kind of material. The very first kind is a wax-based chalk. जो wax-based chalk होता है, it is mostly used on fabric which has fluffy surface like a woolen fabric. So it helps to adhere to the fabric. वो fabric पे stick कर जाएगा and it won't get off easily. वो निकलेगा नहीं, brush off नहीं होगा. The second type is a clay-based chalk. ये clay based chalk जो होता है it can be easily removed from the fabric. It can easily get brushed off, and it is mostly used on fabrics like cotton. Then the next type is a chalk pencil. So the difference is only that it is in a shape of a pencil, which is easier to use and more accurate and detailed lines can be used. Then we have a tailor stacker. Tailor stacker is a kind of an equipment जिसके अंदर refills हो सकते हैं. So chalk can be put. It's a holder. उसके अंदर, as you can see in the diagram also in the bottom one, there is a green color holder and उसके अंदर there is a pin and the chalk can be inserted. The one added benefit of this type of chalk is that the marking can come on both the side of the fabric. So both on the front and back side अगर हमको marking चाहिए तो we can use this tailor stacker. And finally we have the colored pencil. So colored pencil is the one that we commonly use in our life also. So it comes in various color, mostly red and blue is the most common used. So that can again be used for more accurate markings. देन वी हैव इज़ अ ट्रेसिंग व्हील. अ ट्रेसिंग व्हील इज़ बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब भी हमने लाइंस को एग्जैक्टली कॉपी करना होता है, एंड एक्यूरेट ट्रेसिंग ऑफ दीज लाइंस मोस्टली जब हम ड्राफ्टिंग से फ्रॉम पेपर ड्राफ्टिंग टू हम फैब्रिक पे जब हम लाइंस को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, देन वी यूज़ दिस ट्रेसिंग व्हील. सो इट कम्स ऑफ टू टाइप्स. एक जो सॉ एज होता है जिसे पिंड होता है, एंड द अदर वन कम्स विद अ स्मूथ एज. Most commonly we use the pinned edge one. And finally we are having the tracing paper. It comes in various color, so blue color, black color, yellow color, and depending on the kind of fabric or the color of the fabric we are using, we'll use the paper, and it is kept in between the fabric and the draft, and then the design can be transferred by working on it. That's it. In case you have any doubt, you can ask in the comment box.